वरुण धवन एक बार फिर से अपने उसी एलिमेंट में लौटे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जी हाँ, एक बार फिर से कर रहे हैं वो कॉमेडी, और इस बार अपने पिता डेविड धवन के साथ। मुंबई में है जवानी तो इश्क होना है का लॉन्च, जहाँ पर बाप बेटे की जोड़ी एक बार फिर से तैयार है। वरुण धवन ने अपने करियर में कई रोल निभाए हैं, लेकिन एक एज अ कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जहाँ उन्हें दर्शक हमेशा पसंद करते हैं, और इस फिल्म के साथ वही वो लौट रहे हैं इस बार अपने पिता के साथ। What your producers and directors give you, what scripts are there. In the future, I'm on a lookout now to do something totally out of the box, because cinema is changing at such a rapid pace. To get people's attention is really tough. This is a space that I love doing. I love doing it. I love being in his films. I love doing this comedy. But if I don't get that kind of comedy, I don't know which comedy I'll do next, because if I don't get that kind of energy when I'm on set and in the script, I don't know when I'll do a comedy next now. So for now, I'm excited to be in this space because it's quite crazy. It's not for people who are very woke, I have to say that. It's quite wild seeing this, that a film of mine has re-released, and people are going and tagging me and telling me about that experience. And also a little weird because they're like, oh, we grew up on this film. So I've kind of reached that weird age where No. You haven't. I don't know, like all kids are like, oh, when we were 8, you were our favorite hero. And I'm like, now who's your favorite hero? So then it gets weird. But No. Today my film, Aakhe, which is the biggest blockbuster I have given, is releasing today. yeah, it's re-releasing. Actually, Ankhe is also being shown today. And I must talk In the about evening. one person, that is the man who made the film. That was Pehlaj Nelani. A great maker. I am today because of him, I would say. Plays a very big thing. I mean, if in a it's the way you use the music. See, the music should be part of what you're trying to tell or what the director's vision is in that sense, And if it furthers the vision, then why not? For example, Border had Sande Se Aate, but it also had Mitti Ke Bete. It was a mixed bag of a lot of songs. It has a lot of Anu sir's original compositions and some of Mithun's newer compositions as well. And same with this, we have some lovely songs which are Anu sir's songs and Sameer sir's songs in this. But we also have a song by Tanish Bakshi and Gil, a Punjabi composition called Wow, which has become wow now. But I'll tell you what, in 2026, making an original composition work is tougher. So with Wow, it was very tough that how do we make, we know कि ये गाने जब आएंगे तो चलेगी क्योंकि already चल गए हैं. They're already unbelievable melodies, compositions. That's why they've lived till today. But a original गाने को आप कैसे चलाओगे आज? So that's why when we got this word wow, I said yeah, wow तो हर बच्चा बोल सकता है, हर बड़ा बोल सकता है, और बोलते रहते हैं लोग wow wow wow. सैफ ने कितनी बार बोला है? Wow. तो ये मेरे जहन में था कि ये this will work in somehow, and it's a very good original new composition. And we have 2 other songs from Sachin Jigar as well, which are lovely songs as well. So we have everything. There's original, there's nostalgia. It's a mixed bag of a lot of emotions. But the main thing is we are promising you a great time in the theaters. We are promising you a lot of comedy. मैं उसको बेटे जैसा ही समझता हूँ. वही है, जितना इम्प्रूव करेगा अच्छा है. नजर आ रहा है इम्प्रूव कर रहा है. ही डज एवरीथिंग. मुझको भी संभालता है, अभी तो मेरी भी उम्र हो गई है. सो आई थिंक इज अ ग्रेट सन. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. नहीं करता रहो, मेरा बेटा बनाएगा ना भी, वो बना रहा है, ये काम कर रहा है, इससे अच्छी क्या बात है. मैं पीछे हूँ, इनको कुछ ज़रूरत कभी भी हो, कुछ पूछना हो, कोई सीन चाहिए होगा तो मैं हूँ. ब्यूटीफुल कन्याओं के साथ नाचना कितना चैलेंजिंग है, या वो गाना गाना तो रमेश जी ने बनाया था. वी हर्ड इट फर्स्ट टाइम हम लोग जब स्कॉटलैंड में था. इट्स ऑल द सॉन्ग्स सब रमेश जी ने बनाया. दे म्यूजिक कंपनी, तो ऑब्वियसली गाने दे ओनली मेक, एंड वेरी वेल ही इज मेड द सॉन्ग. एंड चैलेंजिंग मतलब इन द सेंस, एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई भी गाना मिले, जैसे वाओ भी मिला हमें, यू कमिट टू द सॉन्ग, यू कमिट टू द सिचुएशन. हमारे फिल्म में जो सिचुएशन है जहाँ पे गाना आता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म आफ्टर ऑल, तो वो मस्ती है, वो सिचुएशन है कि डबल ट्रबल है, या आई यू विद वन गर्ल, आई यू विद बोथ द गर्ल्स, क्या मामला है. हाउ, एंड जैसे आपने कहा कि हाउ कैन यू हैंडल 2 सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, जैसे आपने कहा. आप मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं ये सब करता नहीं हूँ, ये सिर्फ स्क्रीन पे होता है.